Let us start with the next lecture. 12th Maths 1 Logic Part 6, Exercise 1.5. We go for Exercise 1.5. So, we'll go for Exercise 1.5. We already started with Exercise 1.5 yesterday. और कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. That's question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल दिया है यहाँ पे? They say express the following circuits in the symbolic form of logic and write the input output table. ठीक है. So just like the yesterday's sum, कल जो हमने किया था sum, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर P Q R S1 S2 S3 जो भी है switches, उसके लिए हमें statements लिखने पड़ेंगे. So what we see here is S1 S2 S2 S3 S1 dash. So how do we start with that? कैसे शुरू करेंगे हम इसको आज? We say let there is S1 S2 S3, so accordingly this will be P Q R, and there is S1 dash, so let me say it is negation P. ये क्या होगा? Switch S1 is closed. ये होगा switch S2 is closed, and this is going to be switch S3 is closed, and this is switch S3 S1 dash is closed. I hope this is clear. अब given logicals क्या होगा? As we know, we have seen this yesterday. कल हमने देखा है ये कि अगर वहाँ पर AND सर्किट है तो 1 1 1 बाकी सब 0, और AND सर्किट होगा तो सीरीज. AND मतलब सीरीज और मतलब पैरेलल. AND मतलब सीरीज और मतलब पैरेलल. तो ये S1 और S2 दे आर इन पैरेलल, सो दिस इज गोइंग टू बी P और Q. This is in series with S2 and Q, and this is further in series with S3, that is negation. Sorry, negation नहीं, क्या है? R. This is R. This is R और negation P. तो ये रहा आपका given statement in the logical form, symbolic form. This is the symbolic form of the given statement. Symbolic form. आगे बढ़ते हैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल लिखने के लिए. So what are the columns that we look for? We have to have P, Q, R. We have to have negation P. Then we'll need P or Q. Then we'll need P or Q and Q. Then we'll need R or negation P. And finally we need P or Q ANDed with Q, and this further is ANDed with R or negation P. So 3 4 5 6 7 8 columns we need here. So let us insert a table here. यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे. 8 columns and 9 rows. 8 columns and 9 rows. Let me insert this table here. P Q R fine, negation P fine, P or Q थोड़ा वाइड होना चाहिए. This is further little more wider. This is again wide. This is widest of all. Let's write down. It's going to be P Q R negation P. This is P or Q. P or Q. It's ANDed with Q. This is R or negation P. This is P or Q and Q and R or negation P.
Well, let's write down. This is 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Negation P 0 0 0 0 1 1 1 1. P और Q. और में क्या होता है जी? और में what is the input output table for OR? If you see here, OR के लिए 0 0 0 बाकी सब 1. OR के लिए 0 0 0. So it is P or Q. 1 1 1 1 1 1 0 0. AND के लिए 1 1 1 बाकी सब 0. This is to be ANDed with this. इनका दोनों का ANDing होना चाहिए. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0. R और negation P. अब हमें चाहिए R और negation P, दोनों का ORing चाहिए यहाँ पे. So this is again 0 0 0 0 1 0 1 0. And last, I want ending of these two. Ending of these two. 0 0 0 0 1 0 0 0. And that's the answer. Is this clear to you all? Is this okay? Am I clear there? This is question number 4. Question number 4. P or Q negation Q R और negation P. नेक्स्ट सेकेंड है यहाँ पे कुछ दोबारा हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नेगेशन Q क्या गया है? फोर्थ. लेट मी मेक द करेक्शन. R और नेगेशन P इन दोनों का ऑरिंग है. तो ऑरिंग के दौरान क्या हो जाएगा जी? इस दौरान 1 0 1 0 1 1 1 and 1, and then ending of these two. This is 1 0 0 0 1 1 0 0. Yeah, that's the answer. Please check that. So ये है आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. Any doubts about that? Is this okay? Let me go for the fifth question now. We go for the fifth question now. Yes, let's go. Question number 5. चलिए शुरू करते हैं. Okay, we see the switches S1 S1 dash S2 S2 dash and S1. So let's start now. आप बताओगे. Let S1 है P, S2 है Q, S1 dash and S2 dash, negation P and negation P. That's it. So I'll say switch S1 is closed. This is switch S2 is closed. This is switch S1 dash is closed, and switch S2 dash is closed. Okay. Alright. So let's get going now. We know that AND मतलब series और मतलब parallel. तो यहाँ पर पहले ये दोनों
पैरेलल में है, S1 मतलब P or now this is series of these two, that is negation P and negation Q, and this is in further parallel with, ये पूरा का पूरा पैरेलल है मतलब और होगा P1 और P2 का एंडिंग के साथ, P and S1 and S2 का एंडिंग P and Q. Well, this is it. Now let us prepare the truth table. What are the columns for the input output table? ये हमारा आंसर है for the symbolic form of the statement. This is your answer. इनपुट आउटपुट टेबल के कॉलम्स होंगे P Q negation P negation Q. Okay, negation P and negation Q. Further P or negation P and negation Q. इसके बाद होगा P and Q, and the last column is going to be P or negation P and negation Q is ORed with P and Q. Is this clear to you all? Alright. So columns 4, 5, 6, 7, 8 columns are there. 8 columns. And let's get going. यहाँ पर हमें 8 columns I want and 5 rows. Let's get P Q negation P negation Q. ये थोड़ा सा वाइड होना चाहिए और भी ज़्यादा वाइड होना चाहिए. ये भी वाइड होना चाहिए. And this is going to be widest of all. Let's get going. This is P Q negation P negation Q negation P and negation Q. P or negation P and negation Q. P and Q. P or negation P and negation Q is ORed with P and Q. This is 1 1 1 0 0 1 and 0 0. This is 0 0 1 1 0 1 0 1. Ending of these two. This is 0 0 0 1. ORing of these two. 1 1 0 1. Ending of these two. 1 0 0 0. And ORing of these two. This is 1 1 0 1. Is that clear? And that's the answer. Any doubts about that? I hope this is clear to all. I'll go for the last question of this part. इसके लास्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं. ये रहा. या क्या आएगा ये बताइए. या switches we see S1 S2 S2 S3 S3 S1 मतलब basically there are let P Q and R. There is no S1 dash S2 dash S3 dash ऐसा कुछ भी नहीं है. So let's switch S1 is closed. Switch S2 is closed and switch S3 is closed. अब ये दोनों क्या है? What we see here? These two are in parallel. तो क्या होगा यहाँ पर? P और Q. This is in series with Q or R. This is further in series with R or P. Well, बताइए. इनपुट आउटपुट टेबल. कॉलम्स पर इनपुट आउटपुट टेबल होंगे P Q R.
P और Q, Q और R, R और P। अब मैं इसे इस तरह से लेने वाला हूँ। सो पहला होगा यहाँ पर P और and Q or R, and then the next column is going to be P or Q and Q or R and R or P. So, 8 columns. It's going to have 8 columns here. It's going to have 8 columns and 9 rows. Okay. So there are 8 columns and 9 rows. PQR, P or Q, Q or R. Now let's get, this is P, Q, R, P or Q, Q or R, R or P. This is P or Q and Q or R, and this is P or Q and Q or R and R or P. 1 1 1 1 0 0 0 0. Would you like to answer? 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. ORing of these two. 1 1 1 1 1 1 0 0. ORing of these two. 1 1 1 0 1 1 1 0. ORing of these two. 1 1 1 1 1 0 1 0. Any doubt so far? अगला चाहिए ANDing of these two. 1 1 1 0 1 1 0 0. And अब मुझे चाहिए ANDing of these two. This is 1 1 1 0 1 0 0 0. So that's the answer. Any doubts about this? This is input output table. Please tell me whether this is clear to you all. Say yes or no. Hello? Hello? आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next part now. So go to page number 30. Construct circuits. अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सर्किट कंस्ट्रक्ट करने हैं. We'll have to construct the circuits here. Okay? And here I'll be solving. First को छोड़ के बाकी सब मैं solve करने वाला हूँ. Everything. Excluding the first one. So let's get going. Second part. यहाँ पर आपको लॉजिकल फॉर्म दिया हुआ है और इससे आपको प्रिपेयर करना है इनपुट आउटपुट टेबल. सर्किट सॉरी सर्किट अपने लिए तैयार करना है यहाँ पर. सो यहाँ पर we say let P is there, Q is there and R is there. नेगेशन P नेगेशन Q भी है. ठीक है. क्या होंगे स्विचेस बताइए. दिस इज स्विच S1 is closed. Switch S1 is closed. This is switch S2 is closed. This is switch S3 is closed. This is switch S1 dash is closed and switch S2 dash is closed. इस तरह का होगा. Now what I see here is ANDing of these two. AND मतलब सीरीज सर्किट होगा.
So first of all, I'll have the switch, ये दोनों switches S1 and S2 they are in series. अब ये दोनों पैरेलल में है, ये जो सीरीज है सर्किट, this is in parallel with something. Parallel with what? S2, sorry, S1 dash. Negation P is S1 dash. And this is, ये सीरीज में है इन दोनों के, तो यहाँ पर होगा पैरेलल. पैरेलल किसका है? पैरेलल है नेगेशन Q, मतलब S2 dash. P मतलब S1 and R, that means it is S3. This is S3. So this is like this. ये कुछ इस प्रकार का है. ओके, इस तरह का सर्किट है. आई कैन टेक दिस डाउन हियर, इसको मैं नीचे ले सकता हूँ. S1 dash, this is S1 dash, and whole this system is pulled across a battery. यहाँ पर एक बैटरी है. ओके, एंड यहाँ पर लैंप है. And that's it. Is this clear to all? क्या ये समझ में आ गया? Is that clear to all? Hello? Is this okay? Say yes or no? अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं. Let's go for the third one. The next one. यहाँ पर P, so let me say let P is there. Q नहीं है लेकिन negation Q है. R is there and negation R is also there. Negation P is there, negation R is also there. This is switch S1 is closed. This is switch S2 dash is closed. This is switch S3 is closed. This is switch S1 dash is closed. And this is switch S3 dash is closed. बस अब क्या है? Just have to put it. ये दोनों सीरीज में है P and R. So let me say this. This is S1 and S3. फिर ये पैरेलल है नेगेशन Q और नेगेशन R के साथ. नेगेशन Q मतलब S2 dash, negation R मतलब S3 dash. This is in series with, this combination is in series with series of negation P. Negation P मतलब S1 dash and S3 dash. Is that clear? और यहाँ पर सब जगह पर लगा दिया है बैटरी. अब बैटरी ऐसे भी लगा सकते हैं, लैंप जो लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं. That's it. Any doubts about that? समझे? The current is going to flow like this. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ. अब आप बताइए. Tell me now, there is P, Q, R. P negation Q negation R. So let P is something something, Q is something something, R is something something. Negation Q and negation R. This is switch S1 is closed. Switch S2
is closed. Switch S3 is closed. Switch S2 dash is closed and switch S3 dash negation है ना, it's closed. ठीक है. Now let's prepare the P. This is S1 and negation Q and R. This is S1, S2 dash and S3. This is in parallel with this stuff. क्या दिया है? P. Again S1 and अब यहाँ पर दोनों का ORing है. I'll put it like this. This is negation Q मतलब S2 dash and negation R मतलब S3 dash और इन सब के यहाँ पे लगा दिया है बैटरी. We put the battery like this. यहाँ पे lamp. Is this clear to you all? Hello? Any doubts about that? That's the answer to the fourth question. Let me take this further. Fifth question. क्या क्या है यहाँ पे? Let PQ negation P negation Q. PQ negation P negation Q. Switch S1 is closed. Switch S2 is closed. Switch S1 dash is closed. Switch S2 dash is closed. Okay. अब सर्किट बनाते हैं इसका. यहाँ पर और है तीन तीन और है. तो पहला जो होगा सर्किट में, the first switch is P S1. This is in parallel with negation P. Okay, I'll call this as S1 dash. This is in further parallel with negation Q. So let me call this as S2 dash. And this is in further parallel P and Q. This is S1 and S2. और ये सब लगा दिया है वहां पर. I can put it like this. That's it. This is okay. This is the circuit diagram. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The next one. Sixth question. P Q negation P negation Q. So let P Q negation P negation Q. This is switch S1 is closed. Switch S2 is closed. Switch S1 dash is closed. Switch S2 dash is closed. Okay. Well, let's prepare. क्या बनेगा ये? P and Q. They are in series. S1 and S2. ORed with negation P. S1 dash. ORed with P and negation Q. S1 and S2 dash. And this is all put here
across the battery and the power light. Check if it is clear to you all. Is this okay? I'll go for the next question. Yeah? I'll go for the next question. Yeah? Give, yeah, this is an interesting thing. और इसमें let me tell you the questions here. ये दोनों questions star questions हैं. Both are the star questions. ठीक है? And question number 5 is also star question. Let me start with that. I hope all of you have marked it. चलो शुरू करते हैं. First question. Hmm. Hmm. The yeah. Give an alternative equivalent simple circuit for the given circuit. इसके लिए मुझे सिंपल सर्किट चाहिए. तो पहले तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं. नो डाउट दिस इज स्टार प्रॉब्लम. चेक दिस आउट प्लीज. नाउ दिस इज लेट यहाँ पर P है, Q है और नेगेशन P भी है. स्विच S1 is closed. Switch S2 is closed. Switch S1 dash is closed. So what is the logical form or symbolic form rather, not logical, symbolic form क्या होगा इसका? बोलिए. The symbolic form is given by P and ORing of these two, that is negation P और Q. अब मुझे इस गिवन स्टेटमेंट मतलब ये जो है गिवन स्टेटमेंट उसको सिंप्लीफाई करना है. अल्टरनेटिंग easier मुझे चाहिए. I want an easier thing. So first of all I'll use distributive law. बताइए. If I'll open this and I'll use a distributive law क्या मिलेगा? बताइए please. If I use the distributive law, what am I going to get there? ये पूरे ब्रैकेट में ओपन हो जाएगा ना. So this is going to give me P and negation P, P and negation P, or P and Q, P and negation P, or P and Q. Now what does this remind us about? What is P and negation P is equal to false. P and negation P is equal to false, and this is called as complement law. हम इसे कहते हैं complement law. बराबर है क्या? So let's apply this complement law. क्या मिलेगा यहाँ पे? This will become false on P and Q. Now once again here we'll apply some law. क्या होता है यहाँ पे? P or false is equal to P, and this is called as identity law. It is retaining its identity. This is called as identity law. So let's apply identity law here, and what do we get there? So become that is equal to P and Q. तो देखिए इसमें ये है simplified symbolic form. This is called a simplified symbolic form. And this is equivalent to this. Therefore, what is the simplified circuit? The simplified circuit is given by Boolean. The simplified circuit is given by P, that is S1, and Q, that is S2. और यहाँ पर है lamp. So this is the simplified circuit. Is this clear to you all? आपको चाहिए तो आप इसे इनपुट आउटपुट टेबल से भी
चेक कर सकते हैं. You can check this with input output table. RHS सेम आएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. हेलो, से यस और नो प्लीज. Yes, sir. ऑलराइट, चलिए. I'll go for the next question. ये रहा अगला क्वेश्चन. It's here. Now this has got S1, S2, S3. So let us write down the given statement in the symbolic form. Let P, Q, S1, S2, S3. Negation P. So what I'll say here, let switch S1 is closed. Not let switch S2 is closed. Switch S3 is closed. Negation Q क्या आएगा? Switch S2 dash is closed. And this is switch S3 dash is closed. Is this okay? Now what is the symbolic form of the given statement? Symbolic form. बोलिए. This is P and Q or R, and this is further ORed with negation R and negation Q and P. Well, it is something like this. इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है. I have to simplify this now. बोलिए कैसे करेंगे. First of all, yeah, I have to simplify this. We put it over here. थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन. चलिए मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है. कैसे करेंगे जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एसोसिएट दिस, मतलब इसको मैं क्लब करूंगा. दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ. and this is associative law. तो क्या बन जाएगा ये. लिसन देता है. P and Q और R, और ये आएगा negation R and negation Q is ANDed with here. अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉम्यूटेटिव लॉ. उल्टा पुल्टा. So if I apply commutative law, you can change the order only for this part. सिर्फ इस पार्ट के लिए हम ऑर्डर चेंज करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा. P and Q और R, और बोलिए क्या आएगा. negation Q and negation R and Q. Any doubts about this? क्या ये समझ में आ गया सबको. तो एक सेकेंड ना. कॉम्यूटेटिव लॉ मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूज करना है फॉर द फुल ब्रैकेट. मतलब ये P भी मुझे पहले लिखना है. So instead of what I'll say here, this is going to be P and negation Q and negation R. अब मैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूंगा. डी मॉर्गन्स लॉ, या तो फिर एक काम करते हैं. होल्ड ऑन, आई थिंक आई कैन टेक दिस P एंड जो है, इस P को यहाँ से कॉमन लेते हैं. P एंड जो है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये क्या बन जाएगा बताइए.
If I'll take this P out, this is going to become P and Q or R, or negation Q and negation R. देखिए P and this और P and this वही हो गया distributive. Now I'll use De Morgan's law over here. De Morgan's law क्या मिलेगा बताइए? This will give me De Morgan's law when if I'll use. तो ये क्या बन जाएगा? P and Q और R. नेगेशन बाहर आएगा, Q और R बन जाएगा. Look at this carefully. This is P or negation P. P or negation P. This is false, and that's a complement law. It's a complement law. Complement law अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं इधर, so this is going to be P and false, and P and false is always false. P and false is always false. This is actually identity law. This is identity law. So that is equal to false. Any doubts about that? P और एक सेकंड गड़बड़ किया मैंने. क्या होना चाहिए? P or negation P is actually true, huh? Not false. It's true. This is true. और अगर यहाँ पे true है तो इधर क्या आएगा? This is true. And P and true. P and true. P and true. अगर P true है तो true and true is true. P false है तो false. So this is P. This is identity law. So that is equal to only P. So this is basically made up of only one switch. Alternative. This is the simplified logical form. We call this a simplified symbolic form. Symbolic form. मतलब इसी ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसी का मतलब ये है. इट्स द सेम. सो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे होगा बोलिए? सिंप्लीफाइड सर्किट इज गिवन बाय, बोलिए, इट्स ओनली वन स्विच S1. Lamp. And that's it. Is this clear to all? ये सबको समझ में आ गया? That's it. That's simplified circuit. अगर आपको चाहिए तो आप इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी देख सकते हैं. यू विल गेट द सेम थिंग. वही आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? लेट्स प्रोसीड नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पे? Write the symbolic form of the following switching circuits. Construct the switching table and interpret the result. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर है S1 S1 dash S1 S2 dash S2. So let me start with let P is switch S1 is closed. S2 भी है यहाँ पे Q, negation P and negation P. S1 S1 dash S2 dash S2 S1. Okay. Switch S2 is closed. Switch S1 dash is closed and switch S2 dash is closed.
like this. Now what is the symbolic form? Symbolic form आप लोग बताना चाहोगे? Can anybody answer this? Symbolic form. यहाँ पर S1P or negation P and negation Q, or P and Q. Well, that's it. अब मुझे इसका I want to write down the input output table for the same. I want to write down the input output table for the same. Columns क्या होंगे इसके? I can put it like this. So columns होंगे P, Q, negation P, negation Q, negation P and negation Q, P or negation P and negation Q. Then this is P and Q, and the last is going to be P or negation P and negation Q, or P and Q. So many columns are going to be there. 4, 5, 6, 7, 8. 8 columns are going to be there. Well, let's jot down. It's going to have 8 columns. I repeat, it's going to have 8 columns. तो यहाँ पर होंगे 8 columns, 5 rows. PQ, negation P, negation Q, negation P and negation Q, P or negation P and negation Q, P and Q. चलिए शुरू करते हैं. This is P, Q, negation P, negation Q, negation P and negation Q, P or negation P and negation Q, P and Q, P or negation P and negation Q, or P and Q. So this is 1 1, 1 0, 0 1, 0 0, 0 0 1 1, 0 1, 0 1. Ending of these two, 0 0 0 1. इसको और किया जाएगा इसके साथ. This is 1 1 0 1. Ending of these two, this is 1 0 0 0. Oring of these two, 1 1 0 1. चलिए इनपुट आउटपुट टेबल हो गया. अब मुझे चाहिए इंटरप्रेट द रिजल्ट. यू हैव टू इंटरप्रेट इट. क्या इंटरप्रेट करोगे? हाउ डू वी इंटरप्रेट? The lamp is off when S1 is off and S2 is on. Okay, the lamp is off when S1 is open and S2 is closed. At all other times, the lamp is on.
देखिए सारे सर्किट स्विचेस बंद होंगे ना तो भी लैम्प ऑन ही होगा। प्लीज चेक दिस। दोनों स्विच बंद है S1 S2 फिर भी ऐसा है। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सब पार्ट 3 4 में का 3। 4 सब पार्ट 3 क्या क्या है यहाँ पे? S1 S1 S2 S3 S2 dash S3 dash। okay, so let P is switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, R switch S3 is closed, negation P switch S1 dash is closed, negation Q switch S2 dash is closed, and negation R switch S3 dash is closed। इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। ये तीनों पैरेलल में है। सो दिस इज P और negation P, sorry negation Q, second is negation Q। P S2 dash है ना, that is negation Q or negation R। This is in series with this is ANDed with P or Q and R। This is how it goes। Please check whether this is clear to you। क्या ये समझ में आ गया? अब मुझे इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। I have to prepare the input output table for this। कौन भी काफी बड़ा टेबल होने वाला है ये, देखते हैं। चलिए just move over here to the simplified statement, simplified logical form। कॉलम्स होने वाले हैं P Q R negation Q negation R। ओके, यहाँ पर मैं in this case I like to use the, इसको मैं एसोसिएटिविटी यूज करूंगा। सो नेगेशन P Q R negation Q negation R। now I want negation Q और negation R, फिर P और negation Q और negation R, ये हो जाएगा। then I want Q and R, फिर P और Q and R। now let me call this as A and this is B। so यहाँ पर मुझे चाहिए A and B। A and B का मतलब क्या हो गया? A and B का मतलब हो गया this and this। that means it is P or negation Q or negation R is ANDed with P or Q and R। okay, so these are the number of columns that I have। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 columns I want। 10 columns and 9 rows। so quite a big table here। Can columns, 9 rows। yes,
This is PQR, negation Q, negation R, negation Q or negation R. So let's get going. This is P, Q, R, negation Q, negation R, negation Q or negation R. P or negation Q or negation R. Q and R. P or Q and R. The last is P or negation Q or negation R is ended with P or Q and R. So this is the last column. Is that clear? Let's start now. Let's begin. क्या आएगा बताइए? This is 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. This is 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 and 0 1. ORing of these two: 0 1 1 1 0 1 1 1. P or this: ORing of these two: 1 1 1 1 0 1 1 1. Q and R: 1 0 0 0 1 0 0 0. P is ORed with this. P इसके साथ OR किया जाएगा. So 1 1 1 1 1 0 0 0. और ये दोनों का अब ORing किया जाएगा लास्ट में. ORing of these two. So this is 1 1 1 1 1 1 1 1. Wow, क्या दिया है ये? What does this mean? What does this mean? Can anybody conclude this? इसका conclusion कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? Hello? Can you all hear me please? Yes, sir. क्या होगा इसका conclusion बताइए. आप कोई भी switch on करो या off करो, the lamp will always glow. The lamp is always on. The lamp is always on, irrespective of the position of the switches. Switch कुछ भी हो combination switches का, irrespective of position of switches. स्विच का पोजीशन कुछ भी हो, द लैम्प इज ऑलवेज ऑन. और हम इसे टॉटोलॉजी भी बोल सकते हैं. We also call this as tautology. We also call this as tautology. Is this clear to you all? Is this okay? Am I clear to you all? All right. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's proceed further now. Let us take this further. Question number 5. Question number 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 ये टोटल पूरा का पूरा जो है ये स्टार क्वेश्चन है. दिस इज स्टार क्वेश्चन. इसमें से मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करूंगा. ये
फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया। तो लेट्स बिगिन नाउ। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 5। I'll go for the second question now. क्या दिया है यहाँ पे बताइए। Obtain the simple logical expression of the following. Draw the corresponding switching circuit. यहाँ पे दिया हुआ जो है उसे मुझे यूजिंग द लॉज इसे सिंप्लीफाई करना है पहले। आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, और फिर उसके बाद मुझे उसका सर्किट ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ द सर्किट फॉर दिस। तो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। सेकेंड वाला जो दिया है, आई हैव टू यूज वेरियस लॉज फॉर दिस। कैसे करेंगे? तो पहले यहाँ पर और है। जब दो और होते हैं देन आई विल मेक यूज ऑफ द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये मैं इकट्ठा कर दूंगा। आई क्लब दिस टुगेदर क्योंकि दिस इज लाइक ए और बी और सी, सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आगे बताएं। चलिए हो गया एसोसिएटिव लॉ। आगे क्या करेंगे? नाउ हियर ये जो नेगेशन पी है, दिस नेगेशन पी, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने की प्रक्रिया को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ आई यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? सो गिव मी नेगेशन पी एंडेड विथ क्यू और नेगेशन क्यू, इस तरह से, और पी एंड नेगेशन क्यू एज इट इज रहेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव मी समथिंग। व्हाट इज क्यू और नेगेशन क्यू? ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, तो इट्स गोइंग टू बी ट्रू। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप लोग वो टेबल आपके सामने रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम नेगेशन पी एंड ट्रू or P and negation Q. Now what is negation Q and true? So what is P and true? अगर ये ट्रू है तो टोटल ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। सो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी लॉ। इट इज रिटेनिंग इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। दिस इज बेसिकली identity law. So let me use it over here. This will give me that is equal to negation P और P and negation Q, ये बनेगा। अब मुझे इसको ओपन करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वंस अगेन आई हैव टू मेक यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आएगा बताइए? इफ आई यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज गोइंग टू गिव मी negation P और P and negation P और negation Q। तो वंस अगेन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? व्हाट इज P और negation P? अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो टोटल इज ट्रू। ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू and this is called as complement law. This is called as complement law. So I'll use the complement law over here. This is going to give me what? क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे? This is going to be true and bracket negation P or negation Q, isn't it? तो now this is, यहाँ पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा दोबारा? P and true. P and true is P. Again identity law. Identity law. ठीक है? So what will be the answer here? This is going to be negation P और negation Q. तो ये है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ये है उसका सिंप्लीफाइड लॉजिकल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा इसका?
सिंप्लीफाइड सर्किट हमें ड्रॉ करना है। सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए लेट negation p है यहाँ पे, isn't it? So let negation p is switch s1 dash is closed and negation q switch s2 dash is closed। तो ये क्या बन जाएगा फिर? सर्किट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। This is s1 dash and this is s2 dash. That's it. Is this clear to all? Any doubts about that? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll go for the next question. Question number 3. Question number 3. सेम टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन है। बताइए क्या क्या होगा इसके अंदर। I'll have to simplify this first. मुझे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट गलत आ गया है। This bracket is wrong and this bracket is also wrong. So the given question is actually like this. You see, ये है P और negation Q और negation R and अब देखिए यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट चाहिए। तो शायद ओल्ड बुक्स में होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आपके बुक्स में नहीं होगा। P और Q एंड R, वेल इस तरह का गिवन स्टेटमेंट है। बट व्हाट आई सी हियर इज ये जो P और है, P और, इस P और को मैं कॉमन लूंगा और इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। we'll call this as distributive law. We call this as distributive law. So this is going to give me P और ब्रैकेट में क्या आएगा, दिस ब्रैकेट negation Q और negation R and Q and R। ठीक है, Q and R ये चीजें हैं। ठीक है, नाउ यहां से मैं ये जो नेगेशन है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ, sorry, not complement law, De Morgan's law. I'll be using De Morgan's law here. De Morgan's law क्या मिलेगा बताइए। इसके लिए यहाँ से नेगेशन बाहर ले लूंगा मैं। I'll take the negation बाहर, क्या मिल जाएगा ये बताइए। This will give me P of, this negation comes out and this will become Q and R and Q and R। Now look at this, this is looking like P and negation P is always false. This is called as complement law. This is called as complement law. Okay, so let's apply here. This is going to be P or false. And once again I'll use here, what is this? This is P or false is actually P। तो ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स आएगा। सो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी लॉ। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। सो मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिटी लॉ, दिस इज गोइंग टू गिव मी P। अब देखिए इसमें Q और R सब मिट गया, सिर्फ एक सर्किट के ऊपर आपको आएगा ये सेम चीज। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड सर्किट, कैन यू प्लीज टेल मी। द सिंप्लीफाइड सर्किट is given by just a single switch S1 battery
and the lamp. That's it. Is that clear? P के हिसाब से ये सब चलेगा. Any doubts about this? Is this okay? Any doubts about this? Is this okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. अगला क्वेश्चन. Yes. The last question of this exercise. चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको. P and negation P etc etc. और यहाँ पर भी R चाहिए. Negation P, negation P. How do we go for that? R or anything. चलिए एक काम करते हैं. I'll start with इस दोनों को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ. This is actually called as commutative law. Commutative law. क्या बन जाएगा ये? This will become, पहले ब्रैकेट में आएगा Q and P and negation P. ऐसा बनेगा. और साथ ही साथ इन दोनों को मैं क्लब भी कर लेता हूँ ऐसे. इन दोनों को मैं क्लब भी कर लेता हूँ ऐसे. So this is also called as commutative law and कौन सा लॉ है ये? Commutative law and associative law. Associative law. ठीक है, दोनों को कर लिया मैंने. और ये ब्रैकेट जो है पीछे भी आगे जाके मुझे वैसे ही करना पड़ेगा ना. इसमें भी मैं एसोसिएशन कर दूंगा. इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को क्लब करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज नेगेशन P and Q and R. ओके. और P and negation Q and R. इस तरह से बन गया ये. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो P and negation P है वो क्या होता है? P and negation P is always false. Complement law. This is complement law, isn't it? Okay, so this is going to give me Q and false. और इन दोनों में से हम आगे जाके इसे कॉमन लेने वाले हैं. लेकिन उसके पहले मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं इन दोनों को मैं यहाँ पे और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा. एंड कम्यूटेटिव लॉ मतलब एक ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट लॉ और दूसरे ब्रैकेट में कम्यूटेटिव लॉ. तो R पहले आ जाएगा. R एंड नेगेशन P एंड Q, और इधर भी R एंड P एंड नेगेशन Q. इस तरह का बन गया ये. Now the next thing that I'll use here is
this Q and F, Q and false. Anything and false is false. Complement law. Sorry, identity law, not complement law, identity law. Anything and false is false. So this is identity law. यहाँ पे. So let me start here. This I'll write it as this is false, or this bracket, or this bracket. So this bracket is R and negation P and Q. This bracket is R and P and negation Q. Any doubt so far? Okay. अब दोबारा बताइए, यहाँ पे मैं यूज करूंगा false or something something, isn't it? So what is P or false is actually P, and this is again identity law. Identity law. So I'll use it over here. This is going to give me क्या मिलेगा यहाँ पर F or this. So this will be this bracket R and negation P and Q, or R and P and negation Q. Are you all understanding that? In the next step, I prefer to take this common, जिसे हम कहेंगे distributive law. In the next step, I'll take this R common. So this is going to be distributive law. बताइए क्या होगा? So this is going to become R ANDed with negation P and Q, or P and negation Q. And let me tell you, इससे आगे हम इसको solve नहीं कर सकते. We cannot solve this further. So this will be the simplified statement. और इसका simplified circuit क्या होगा आप बताइए मुझे. Simplified circuit. Tell me now. This has got R. R मतलब S3 होगा. So this is S3 ANDed with ANDing of these two, ANDing of S1 dash and S2, ORed with S1 S2 dash, and this is the lamp. Well, that's the answer. Is this clear to you all? Hello, is that clear to you all? Well, that's the end of this exercise, and I think we'll stop here today.